स्वागत है आपका पल्स संवाद में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। दुनिया में सैन्य शक्ति और तकनीकी वर्चस्व की दौड़ तेज होती जा रही है। हाल ही में चीन ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए अपनी छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का टेस्ट किया, जिसने ग्लोबल मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। चीन की इस तकनीकी उपलब्धि ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत समेत अन्य प्रमुख सैन्य शक्तियों को भी सतर्क कर दिया है। बीते साल 26 दिसंबर को चीन ने अपने संस्थापक माओ त्से तुंग की 131वीं जयंती के अवसर पर अपने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 की उड़ान का प्रदर्शन किया। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये विमान भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार से बच निकलने में सक्षम है और इसे कॉम्बैक्ट ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब J-36 की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। पहला, पुंज रहित डिजाइन, यानी इससे स्टील्थ क्षमता बढ़ती है और ये दुश्मन के रडार पर पकड़ में नहीं आता। बता दें कि इसका शेप ट्रायंगुलर या डायमंड शेप है। ड्रोन एकीकरण, ये विमान ड्रोन को नियंत्रित कर युद्ध के दौरान निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जिसे आसान भाषा में हम BVR कहते हैं, मिसाइल सिस्टम, ये लंबी दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। सुपरसोनिक गति और लंबी दूरी, इसे हवाई हमलों और समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इसकी गति 2.5 मैक यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर पर घंटे है। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट जॉन वॉटर्स ने इस विमान की तुलना अमेरिका के B-12 स्टील्थ बॉम्बर से की है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ बिल स्वीटमैन का कहना है कि ये विमान हवा में एक रणनीतिक शक्ति संतुलन को बदलने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री एनालिस्ट पीटर लेटन का मानना है कि J-36 का डिजाइन रूस के MiG-31 से प्रेरित है, जो अपनी लंबी दूरी और उच्च गति के लिए जाना जाता है। भारत के रक्षा एक्सपर्ट्स के अनुसार J-36 का आगमन भारतीय वायुसेना के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान ने भी चीन से 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की प्रतिक्रिया तेज कर दी है। भारत को अब ये तय करना होगा कि वो अपने लड़ाकू विमान बेड़े को कैसे उन्नत करे। भारत के सामने 3 प्रमुख विकल्प अभी भी हैं। पहला विकल्प है कि 5FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होना, यानी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम में शामिल होकर भारत उन्नत स्टील्थ और AI आधारित युद्ध तकनीक प्राप्त कर सकता है। दूसरा विकल्प है GCAS के साथ साझेदारी करना, यानी ब्रिटेन, जापान और इटली के ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम में भागीदारी करके भारत नई पीढ़ी की सैन्य क्षमताओं को विकसित कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना। भारत अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर लॉन्ग टर्म के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 31 यानी 31 स्क्वाड्रन संचालित कर रही है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। 4.5 पीढ़ी के राफेल लड़ाकू विमानों के बावजूद भारत के पास अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिससे भारत को आने वाले वर्षों में पुराने विमान पर निर्भर रहना पड़ेगा।
चीन के J-36 के आगमन और पाकिस्तान द्वारा J-35 के खरीद ने भारत के रक्षा नीति निर्धारकों को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत को ये तय करना होगा कि वो विदेशी तकनीक अपनाए या फिर अपनी स्वदेशी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे। आने वाले सालों में भारत की ये रणनीति न केवल उसकी वायुसेना की शक्ति को परिभाषित करेगी, बल्कि वैश्विक रक्षा परिदृश्य में भी उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। हाल के वर्षों में चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने सैन्य उपकरणों को तेजी से विकसित किया है। उदाहरण के लिए हाई स्पीड J-20 को हवाई श्रेष्ठता और लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत स्टील्थ क्षमताओं और अत्याधुनिक एवियोनिक्स है। स्टील्थ फाइटर आधुनिक सैन्य विमान में चीन की बढ़ती ताकत का नवीनतम अध्याय है और ये F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी जेट विमानों को टक्कर देता है। भारत निर्विवाद रूप से सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण रक्षा खर्च में अंतर है। चीन का रक्षा बजट 471 अरब डॉलर है, वहीं भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर है। इस कारण चीन शोध एवं विकास के साथ हथियारों के निर्माण पर ज्यादा खर्च कर पाता है। वहीं भारत अपने कम रक्षा बजट के बावजूद चीन को टक्कर देने लायक हथियारों का निर्माण कर रहा है। अभी तक भारत के हवाई बेड़े में सबसे शक्तिशाली विमान राफेल है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं। इन विमानों को भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ये विमान 4.5 पीढ़ी के माने जाते हैं। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम है। दूसरी तरफ तेजस लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही है। अब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने रक्षा उत्पादों के विकास में निजी भागीदारी बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की वकालत की है। And apart from that, also like in Tarang Shakti, on the sidelines of that exercise, we held Def Expo, just to project whatever our industrial capability is, and for the foreigners to have a look at it, so that they get a boost in case there are some foreign agencies which are interested, or at least our own people understand where we are. Critical projects like I talked about, Tejas, Dhruv, Prachand, projects like Su-30, MKI, Indigenous upgrade, of course, LCA Mark II, AMCA. Air Force is supporting these projects, not only just supporting in D&D, not only just supporting in testing and in the design process, but also in ordering this for their own. Because we understand that if we do not support these projects, we will never, because these are the stepping stones, these are the small steps that we are taking. But are these small steps good enough? We've just heard that, shining stars versus the galaxy that we need. Obviously, these steps are not good enough. We need to, much more is desired, especially in niche areas like aero engines, like software designing, SDRs, software radios, the AESA airborne radars, the BVRs, the weapons, long-range weapons, various sensors, UCAVs, hypersonics, semiconductors, and the manufacturing, the metallurgy. So there are a lot of areas which are still lying sort of at a very, very raw stage. Atmanirbharta, it just cannot be a buzzword. It has to be something that everybody has to work towards, everybody has to
ride on that. And like I made a statement, I'm reminded of July when I was standing here and, I said that everybody has to be together in it, whole of nation approach. And we heard every time, same thing we keep hearing. If the users are trying to be Atmanirbhar, then everybody else, the entire environment has to make sure that the user stays on track. That means the user keeps getting what they need. I'm not saying what they desire, what they need. At least that must reach the user and in time. There are certain concerns. I have, again, like I said, I have jotted down a few concerns. Some of these have been already spoken about, but I will just reiterate. If nothing else, it's for, Group Captain Mahadevan's work that he doesn't feel offended that मैंने इतना कुछ लिख के दिया इसने बोला नहीं. So now R&D, it loses its relevance if we are not able to meet the timeline. Just as I said, in time is a very important thing, and we need to give greater leeway to the researchers. There will be failures. Let's not be scared of failures. I think we are losing a lot of time because we are scared of failures. We think too much before we, get on with something. Defense Secretary just talked about it, that how multiple programs are running in some other countries. There's wastage, but the timeline is met. If suppose there is a guest coming home and there is something which suddenly realize that, it is required, I've forgotten to order that. Don't you ring up one shop, don't you send your man Friday, you go somewhere else. Don't you try 3-4 sources straight away. And many times we'll end up with having 2 or 3 of those items in our hand. And we say, चलो बाकी का क्या करना है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी का crisis management हो गया. So defense is one sector where time is very important. If we don't meet the timeline, that technology of no use to me. So we need to learn from our failures, move on, but not be scared of those failures. Funds, we have just heard of, that R&D funds are woefully short. We are just about at 5%, should be at 15%. And we have to make sure that these funds are increased and they are available to private players also. Because when it comes to private industry, they are all there for money. I know it. For them to be in defense sector, something must come from the heart. It cannot always be for the money. But finally, they have to make a viable industry. They have to pay those people who are working for them. So there will be some kind of worry about money and how much money is getting lost in this R&D. So if we want some technology to come up, maybe we will have to fund these. That's why these small schemes have come up. But we need to increase these schemes to even bigger things. Maybe have some competitive approach, as what the Defense Secretary said. Another delay, another issue is the cumbersome process of testing, evaluation, and certification. Again, we the test pilots also responsible. We get stuck to one particular thing and just remain there till it moves there. Beyond that, I am not moving. And it is again, something that you learned over a period of time. Whenever you say, okay, I'll accept this much, you find then 10 more things are not given to you because you started accepting. वो सुना है ना एक किनारा पकड़ के लाइक ऊँट की बात सुनी है कि एक टांग अंदर करता है और धीरे धीरे पूरा अंदर आ जाता है टेंट में. So something like that happens. So once bitten, twice shy. So what I do is, no, till you reach this, till you show me this, I am not going anymore. So there is no parallel approach taking place. And for the private players, there is no place to go. They are too small at times. They are the beginners. They cannot set up all the labs. But the labs which are set up are government owned and controlled by DRDO or PSUs, and private players are actually their competitors. So they are given a second treatment, stepmotherly treatment. Even the certification agency, finally they are getting controlled by
DRDO. Obviously, little bit of inclination will be there more towards a DRDO lab than towards a private player. So this is something that we need to think about. Capacity building, we discussed about that. We need to increase our capacity. Again, when do we need the capacity? I may not need it throughout, but I'll need it in spurts. So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. Government has done their part. These DPMs, DPP exist, and we've just heard the DefSec saying that he already convinced that we need to evolve, we need to change. Obviously, nothing can be permanent. As the things change, we have to keep evolving ourselves and these policies. This is a year of reforms for defense, for Ministry of Defense. I'm sure we will see some good reforms coming our way, and all these various schemes that I talked about, are going to help the industry, the private industry, come up. But we all understand that Atmanirbharta cannot be achieved overnight. We can't say that I want to be Atmanirbhar and tomorrow I will have everything being designed, developed, manufactured within the country. It is a slow process. It is a painful process. But are we in mission mode towards it? Are we working in mission mode, what we call mission mode? I don't see that energy, whether with us or with the designers or with the manufacturer. That energy has to come in from somewhere. So we need to, identify how do we get on this Atmanirbhar track. I think the only way to do it is parallel processing. It has to be a parallel approach. We can't say that tomorrow onwards I will not buy anything. It has been again alluded by even Defense Secretary, Chairman DRDO, everybody is saying that. But we need to identify correctly. What is it? What is happening is, what do I identify as my next R&D target? Some low-hanging fruits. And what I develop, what I make is available at 5 places in the world. So do I need to put my resources there? Or should I go it for some niche technology which no other country will share with me? We need to think about it. Some short-term solutions, because if we are well short of our kitty, if we are becoming, to remain relevant or potent enough to deter, I need certain things, then I need to maybe purchase certain things outright from the market, what is available. Of course, that also comes with a cost because I will be relying on that manufacturer for maintenance, for support, for everything. So second option is, if we are a big enough buyer, somebody will say, I will transfer the technology of manufacturing and we'll make it India. People are ready to even say that we will not only make in India, we will sell from India. We will set up such big facilities here. If that is available, we need to follow that track for certain purchases. And of course,
certain technologies, like I said, which are niche technologies, where we know that nobody will share with us, we need to continue with our R&D effort, and again, need to be in mission mode. And technology is changing very fast. If you don't, don't be fast enough in developing those, you miss the bus. Then you will be chasing another one. If I can sum it up, we've heard about the domestic absorption capability, that we do not have the domestic market to be able to make those numbers which will be viable financially. I would like to say that let's not become Atmanirbhar because we want to save money. Let's become Atmanirbhar from strategic point of view, that I need to be self-reliant and I'm ready to pay for it. Even if I'm paying more for an indigenous product, because there is R&D cost which needs to be amortized, because the numbers are not that large, because there is no export market for the time being. But still, let's go for that. So we will end up paying more, and we should not be shy of that. And so, money-wise, like DefSec said, there is no shortage of money. We find it difficult to even spend the budget that we have. And another thing is that technology has to come up, that has to come in time. Because according to me, technology delayed is technology denied. We cannot afford to be, just lingering on, and something which comes up, and by the time it comes up for the user to use, it is irrelevant because there is something else much bigger, much better available with the adversary. There was one, statement we used to say earlier, that कोई बात अगर difficult नहीं होती थी, वैसे थे ये कोई rocket science थोड़ी है. I'm sure, I think most of us have heard it. But I think in rocket science, India has done very well. So for Indians, we should not be making that statement. I think we should be saying ये कोई aircraft science थोड़ी है. Just in lighter vein. But I'm sure the discussion today involving so many bright minds, from the users, academia, the practitioners, the aerospace industry, the DRDO, everybody is here, and these discussions will bring out something, which will help us grow and go on the right path to help us invigorate this whole system of Atmanirbharta and help us stay on track for our final goal of being fully self-reliant by 2047. My compliments again to CAPS and SIDM for organizing this, and my best wishes for all the speakers and panelists for this seminar today. Thank you very much for your patient hearing. भारत के सामने अब एक स्पष्ट चुनौती है। क्या वो अपने रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाकर लंबे समय तक टिकाऊ सैन्य शक्ति विकसित करेगा, या तत्काल सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सहयोग का सहारा लेगा? आने वाले दशक में भारत को न केवल अपनी वायुसेना बेड़े का आधुनिकीकरण करना होगा, बल्कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को भी प्राथमिकता देनी होगी। स्वदेशी AMCA परियोजना में तेजी लाना, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारियों पर रणनीतिक निर्णय लेना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भारत के लिए अनिवार्य हो गया है। J-36 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के सामने भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भविष्य के युद्धों में देश की हवाई सुरक्षा मजबूत बनी रहे। सही दिशा में लिए गए निर्णय न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।
अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाए और आने वाली चुनौतियों का डटकर मुकाबला करे। और आज के हमारे शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी जहां हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।